So hey guys, welcome back to my YouTube channel Master Science with Medico. In today's video I'll be teaching you about second and third equations of motion. Okay, if you do remember, we completed the first equation of the motion in the previous video, in which we derived it via using the graph. So we'll be using similar graph and we will be deriving the rest two equations, that is second and the third. Let me tell you कि three equations क्या थी बेटा motions की. पहली थी v equals u plus at. सेकेंड होती है s equals ut plus half at square. थर्ड होती है 2as equals v square minus u square. ये थी हमारी थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन जो कि हम लोगों को डिराइव करनी होती है, पेपर में पूछ ली जाती है डायरेक्टली. ठीक है, फर्स्ट वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड. अगर आप लोगों को याद हो, मैंने कहा था कि पेपर में क्या आता है, ये नहीं कहेंगे कि डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन, दे विल से डिराइव द वेलोसिटी टाइम रिलेशन. ठीक है, सो यू विल हैव टू डिराइव द फर्स्ट. सेकेंड के लिए दे विल से डिराइव द पोजीशन टाइम रिलेशन. थर्ड के लिए दे विल से डिराइव द इक्वेशन फॉर पोजीशन एंड वेलोसिटी रिलेशन. ओके, सो आप लोगों को इस नाम से याद रखनी है, वेलोसिटी टाइम, पोजीशन टाइम एंड वेलोसिटी और पोजीशन. ठीक है, फर्स्ट टू इक्वेशंस में टाइम आ रहा है, थर्ड इक्वेशन में देयर इज नो टाइम. सो मतलब वी कैन से कि थर्ड इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, मतलब इट डजेंट इंक्लूड एनी क्वांटिटी नोन एज टाइम. मैंने आप लोगों को कहा था कि 5 टर्म्स यूज़ करेंगे, u v a t s, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस. इन 5 पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए वी हैव टू डिराइव ऑल द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन. ओके, सो इन द प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू कि हम लोगों को कुछ लाइन्स लिखनी है ऊपर. इफ़ यू रिमेंबर कि लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, कवरिंग अ डिस्टेंस s, हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, इन टाइम t द वेलोसिटी चेंजेस टू v. राइट, सो ये आप लोगों को ऐसे ही एज इट इज कॉपी करना है, कोई सी भी इक्वेशन डिराइव करने के लिए आ जाए. सो फर्स्ट वी विल बी डिराइविंग द सेकेंड इक्वेशन. The graph remains the same as we did for the first equation, that is I will be drawing once again. Okay, so this was the graph which we drew. From here the object was starting from point A. So this was initial velocity u. This was the graph which you have to draw. Okay, so here it is time and here it is velocity. The object is not starting from O, rather it is starting from A. That's why I said in the previous line कि एक object is moving with initial velocity u. I didn't say कि it started from rest. So this is A, this is D, this is B, this is E and then this is C. You can correlate this graph given in the NCERT book on page number 107. मैं तभी उसी की ऐसा बना रही हूँ कि अल्टीमेटली यू विल हैव टू मेक द बुक योर फ्रेंड. ओके, सो वी विल बी यूजिंग द सेम थिंग्स. सी नाउ, लेट मी टेल यू what these quantities represent. Okay, so OA, that is this one, is the initial velocity. So you can write OA equals small u, that is the initial velocity. BC equals final velocity, this whole BC. Okay, then you can say time interval is t, which is represented by the OC. So OC equals t. ठीक है, इतना आप लोगों को समझ आ गया. अब देखो BC क्या है, V है, और हम लोगों ने क्या किया, वी हैव ड्रॉन द लाइन्स पैरेलल टू OA एंड OC. OA के पैरेलल ड्रॉ किया CD और OC के पैरेलल ड्रॉ किया AD. ठीक है, तो इफ़ यू कैन सी, आई कैन राइट BD equals BCC, BD equals BC minus DCC.
You can draw this graph and then see the explanation which I am giving now. BD can be written as equals to BC minus CD. This is what we did in the previous equation, but what we will be doing in this graph or in this equation is that we will be correlating the things with the distance, and for the distance we need to calculate the area under the graph. For example, this was our graph, right? This were the quantities O, A, this was D, this was C, this was B, right? So what you have to do is now we'll have to calculate the area under the graph. So area under O, A, B, C, this area you have to calculate. Wait, I'll change the pen. See, this was my graph. This was point O, sorry, this was O, this was A, this was D, this was C, this was B, this was E. Okay, so what we have to do is we'll have to see, oh, I'm sorry, this was B, this was D, and this was C, and that was E. You can do anything, but I am taking just the same as your books. Okay, so what you have to do now, take the proper noun. I thought it was. So what you have to do is you have to calculate the area under the curve graph OABC. ठीक है, OABC, इसके अंडर का जो एरिया है दैट इज व्हाट यू गॉट टू कैलकुलेट. मतलब बेसिकली आई कैन से कि यू हैव टू कैलकुलेट दिस O, A, B and C. This is the area which you have to calculate. And if you can see कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं बेटा. इसके अंदर आ रहा है एक तो ट्रायंगल AB and this was I think D, ABD and rectangle OADC. So what we can do is we can find out the area of this triangle and we can find out the area of this rectangle, and then we can add them so that we can get the area under the graph. Or what we can do is directly we can calculate the area of trapezium OABC. फुल ट्रेपीजियम ही तो है ना, ये तो मर्जी है दोनों से कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट अस सॉल्व इट नाउ. सी, सो डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू एरिया अंडर द ग्राफ. बेटा जब भी क्वेश्चन में आए कैलकुलेट द डिस्टेंस, यू हैव टू फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ. दैट इज एरिया OABC which is a trapezium, which you can write equals to area of triangle ABD plus area of rectangle OADC. Now everyone knows कि area of triangle होता है half into base into height. So half into base is our AD into height is our BD plus area of rectangle is length into breadth. So it is OA into OC. You can correlate with the graph which you have drawn. Okay beta. So see, now we have is some values. Okay, see, OA equals to U. If you can see initial velocity, OA is U. AD and OC both are T. ठीक है, and we calculated from first equation कि BD was equals to AT. ठीक है बेटा. Now we will be putting the values. So OA की जगह रखेंगे U, OC और AD की जगह रखेंगे T. ठीक है, और BD की जगह रखेंगे AT. So what we get is half AT square plus UT, right? We will get it half AT square plus UT. Or what we can write is as equals UT plus half AT square. This is my second equation of motion. That is the relationship between distance and the time. I hope it's clear. Now similarly we will be deriving the third equation. बेटा उसमें क्या करना है हम लोगों ने, थर्ड इक्वेशन में जैसे कि आप लोगों को याद हो ऐसा ग्राफ था. देखो
ये वाला ग्राफ है ना, ओ यहाँ से ए वो स्टार्ट किया, दिस वॉज द ग्राफ, ठीक है, ओ ए, then this was C, this was A, B, this was D and this was E, ठीक है बेटा। हमने क्या किया था, इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल के एरिया को ऐड कर दिया था एंड वी फाउंड आउट द डिस्टेंस। अब है तो थर्ड में भी डिस्टेंस, लेकिन आई विल डायरेक्टली बी फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बेटा, ठीक है, दिस होल ट्रेपीजियम, ओ ए सी डी का ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे, जिससे हमारी थर्ड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। लेट अस सी। Now, take the proper noun. I thought it was difficult. Okay, so let us see. What we can write here is that S equals, sorry, what is S? S is the distance traveled. So distance can be written as area under the graph. Again same thing. वो explanation लिखना मत भूलना बेटा, पहले वाली। Okay, then it will be area of trapezium OABC, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू OC इंटू OA प्लस BC, ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। हाफ इंटू हाइट क्या है, OC है, और सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स क्या हो गया, OA प्लस BC। अब फिर से वही वैल्यूज पुट करेंगे बेटा, OA क्या है, U है, BC क्या है, V है, OC क्या है, T है। सो व्हाट वी गेट, हाफ इंटू T इंटू U प्लस V, हाफ इंटू T इंटू U प्लस V। Now if you remember from the velocity time equation, or you can write from first equation of motion, we have V equals U plus AT, all right। यहाँ से I can write कि AT equals V minus U, और I can write T equals V minus U by A। देखो बेटा, आपको याद हो तो थर्ड इक्वेशन क्या है, 2AS इक्वल्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बेसिकली हमें टाइम इसमें नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं टाइम को रिप्लेस कर रही हूँ, टाइम को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, उससे टाइम विल बी रिप्लेस्ड, ठीक है। सो मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से मैंने टाइम की वैल्यू निकाल दिया, आई विल बी पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, ठीक है। सो आई कैन राइट इज एस इक्वल्स हाफ इंटू टी इंटू, सॉरी टी की वैल्यू जो निकाल ली बेटा, v माइनस यू अपॉन ए इंटू वॉट वी हैव, v प्लस यू, दिस इज वॉट वी हैव। अब यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, इस 2a को उधर ले जाऊँ, सो आई कैन राइट 2as इक्वल्स a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली v माइनस यू इंटू वी प्लस यू क्या होएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दैट वॉज माई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वेरी ईजी, ठीक है। सो वॉट वी डिड वॉज, वी डिराइव्ड सेकेंड इक्वेशन, देन वी डिराइव्ड थर्ड इक्वेशन। थर्ड क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड द वेलोसिटी। आई होप इट्स क्लियर, बहुत ईजी है, तीनों इक्वेशन आनी चाहिए डिराइव करनी। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू एग्जाम्पल 8.5, 8.6, 8.7 and the uniform circular motion. So with this our chapter will be completed of the motion. Okay, so I hope it was clear. Keep liking the videos and keep subscribing the channel. So bye bye, take care, stay safe.